those sentences which are based on single words. What is go here? Go is a single word sentence. What is come here? Come single word sentence. What is eat here? Eat is a single word sentence. जिस तरह मैं आपको पहले स्लाइड में बता चुका हूं कि we have got two types of sentences, single word sentence and multi-word sentence. So what are single word sentences? They are one words like go, come, eat. देखने में तो ये एक लफ्ज ही नजर आते हैं, but they are complete sentences. और ये आपको सिंगल पेपर प्रिपरेशन में और सेंटेंस करेक्शन में आपको कंफ्यूज भी कर सकते हैं. आपको कंफ्यूज इस तरह कर सकते हैं कि गो आ गया तो इसमें आपको कहेंगे कि इसमें करेक्शन करें. मिसाल के तौर पर गो जी कैपिटल है और ओ स्मॉल है, तो आप कहते हैं तो ऑलरेडी ठीक है और उसके साथ फुल स्टॉप भी है, तो ये आपको कंफ्यूज करेंगे. दे विल कंफ्यूज यू. You will think that it is a single word, but it is not only a single word, it is a complete sentence. तो सेंटेंस के लिए फिर क्या होना चाहिए? The first letter must be capital. तो आप करेक्शन क्या कर सकते हैं? G स्मॉल को G कैपिटल में कन्वर्ट करके उसको करेक्ट कर सकते हैं, because they are single word sentences. और इसी तरह मल्टी वर्ड सेंटेंसेस, ग्रुप ऑफ वर्ड्स. She studies English, I play football. So she studies English, it is also a sentence. I play football, it is also a sentence. So the previous three sentences belong to single word, and the last two sentences belong to group of words. So a sentence is mainly divided into two major types according to its information: single word sentence or multi word sentence. अब single word sentence क्या है? If a single word sufficient to express item, then use single word. If two or three words are sufficient to express your idea, then use it. And if 20 words, then use 20 words. If more than words, then use clause. So if an idea comes in my mind, which I want to express in words which is sufficient. So this extra information से मुराद ये है, a question comes in mind that what is the exact number of words in sentence? How many words can we use in a sentence? Can we use 5 words? Can we use 10 words? Can we use 2 words? Can we use only 1 word? How many words can we use? What is the minimum number of words, or what is the maximum number of words? So the answer is that you cannot decide the number of words before you see your idea. It is your idea or it is your thought which can decide the number of your words. There are some ideas which can be expressed by one word. So in this case, only one word is sufficient. There can be some words, some ideas which cannot be expressed in single word. You may need more than single word. तो कुछ आइडियाज ऐसे होते हैं जिनमें एक लफ्ज भी काफी होता है, जिस तरह पहले कहा मैंने काम ईट को, और कुछ आइडियाज ऐसे होते हैं जिनमें हम एक लफ्ज से ज्यादा की जरूरत होती है. So it depends upon your idea. It depends upon your idea. So the exact number of words is not clear. It depends upon your idea. और ये भी बहुत जरूरी है that we always use the necessary words. There is no need to use unnecessary words in sentence. Unnecessary words से मुराद वो words जिनका हमारे idea के साथ कोई ताल्लुक ही ना हो. Those words which are not related to our idea are not used in our sentences. So some sentences can have 4 words, some sentences can have 5 words, some sentences can have 10 words, some sentences can have 20 words. So if a sentence has 20 words, it means these 20 words were the requirements of that idea. If a sentence has 10 words, it means these 10 words were the requirement of that idea. So every number of words is the requirement of that idea.
example. An idea which comes is, here, I teach English at Calc 2 o'clock, friendly for money. So see, this is a sentence in which I teach English at Calc 2 o'clock, friendly for money. See, unnecessary words should not be used in sentence. It takes time. What is in my idea? मेरे idea में कौन-कौन से ingredient शामिल हैं? Job. What is my job? My job is teaching English. What time do I teach? 2 o'clock. At which place do I teach? Calc is the name of my academy. It means Kabul English Language Center. And how I teach? What is the manner of my teaching? Friendly. And why I teach? What is the reason of my teaching? For money. So these were the small ingredients of my idea. And for every ingredient, I used a separate word. So there isn't any unnecessary word. There isn't any unnecessary word in my sentence. If I did not want to tell you about the time, I would definitely not use 2 o'clock. If I did not want to tell you the reason, I would definitely not tell you for money. If I did not want to tell you the place where I teach, I would definitely not tell you the place. But these were the top part of my idea. That's what used everywhere. Now, इस पॉइंट के बाद हम आते हैं अपने मेन लेसन की तरफ, सिंगल की तरफ. यहाँ तक आपको बहुत सी चीजें क्लियर हो गई हैं. ये क्लियर हो गया कि सेंटेंस जो है वो ग्रामर का पहला स्टेप है जिसमें हम करेक्शन कर सकते हैं, उसमें हम आइडिया भी क्लियर कर सकते हैं. दूसरा ये है कि हम सेंटेंस में कितने कितने अल्फाज यूज कर सकते हैं, तो वो भी आप क्लियर हो गया कि हम सेंटेंस में जितने भी अल्फाज यूज कर सकते हैं वो अपने आइडिया और अपने इंफॉर्मेशन के मुताबिक यूज कर सकते हैं. तीसरी बात आपको ये क्लियर हो गई है कि हमारे पास सिंगल वर्ड सेंटेंस भी है और मल्टी वर्ड सेंटेंस भी है. अभी आते हैं सिंगल वर्ड की तरफ. दैट आई से दैट वी हैव सेंटेंसेस व्हिच कैन बी कॉल्ड सिंगल वर्ड सेंटेंसेस. सिंगल वर्ड सेंटेंस से मुराद कौन से सेंटेंसेस? सिंगल वर्ड से मुराद वो सेंटेंसेस जो हमेशा एक ही वर्ड से इंट्रोड्यूस हो. Single word sentences are those sentences which are always introduced by single word. अभी सवाल ये है कि ये सिंगल वर्ड सेंटेंस अगर हमारे पास मौजूद है तो क्यों ना हम हर जगह अपना टाइम भी बचाएं, अपनी एनर्जी को भी बचाएं और सिंगल वर्ड ही यूज करते रहें. But it is not possible. क्यों? Because I told you before that for different situations we have different sentences. अगर single word sentence की situation बनती है then go for it. अगर single word sentence की situation नहीं बनती and you use it, it will be wrong. तो ये गलत होगा. So what are the situations for using single word sentence? So my dear students, there are 3 situations. 3 situations ऐसी हैं जहां पे हम सिंगल वर्ड सेंटेंस को यूज कर सकते हैं. और वो कौन कौन सी है? नंबर 1, इंपेरेटिव मूड में. नंबर 2, इंट्रोगेटिव मूड में. एंड नंबर 3, रिप्लाई मूड. आंसर, लेट मी रिपीट once again. In imperative mood, interrogative mood, and reply mood. So in these 3 situations, we are allowed to use single word sentence, and without these 3 situations, we are not able to use any single word sentence. Now, what is imperative mood? Imperative mood से क्या मुराद? Imperative mood से मुराद that mood in which we order, जिसमें हम किसी को
आर्डर या अमर या हुक्म देते हैं काम करने. When we tell someone to do something, when we order someone to do something. So in imperative mood, we are allowed to use a single word sentence. कैसे? For example, मैं ऑर्डर करता हूँ come, sit, speak, write, eat, drink, talk, jump, run. So these are our single word sentences. On the other hand, we have interrogative mood. What is an interrogative mood? Interrogative mood means question mood. Interrogative means question. So when we ask a question from someone, this situation, we can also use a single word sentence. But it is not for every type of question. It's not for every type of question. It is only for information question. मिसाल के तौर पर she went to Islamabad. तो क्वेश्चन आता है when कब why क्यों why how कैसे how who with whom किसके साथ. So these are also what single word sentences in interrogative mood. And number 3 is reply mood. जवाब में भी हम single word use कर सकते हैं. For example, what do you want to eat? What do you want to eat? क्या खाना पसंद करोगे? Simple answer: chicken, fish, potato, vegetable, soup, burger, sandwich. What do you want to drink? Pepsi, Sting, और क्या मरिंडा. वैसे सर्दी में इन कोल्ड ड्रिंक से तरह. Where do you go? कहाँ जाना चाहते हो? कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, लंदन. Right? So in these 3 situations, we can use single word sentence. तो अभी तक आपको single word sentence शायद मालूम था या मालूम नहीं था, but now today you came to know that we have single word sentences. हमारे पास single word sentence भी मौजूद है जो हम imperative mood में, interrogative mood में और reply mood में use कर सकते हैं. अभी आते हैं multi word sentence, the most important one. The most important one. How is multi-word sentence? What is multi-word sentence? Multi-word sentence से मुराद वो sentences जिनमें एक से ज़्यादा word है, in which we have more than one word. Like previously I said single word sentence. Here I say multi-word sentence. So what is multi-word sentence? In multi-word sentence, we always have more than one word, and that multi-word sentence is always divided into 2 parts. Let me say, it's a kind of sentence that has subject and predicate and always gives complete meaning and sense. It is a group of words which are divided into 2 parts. Number 1 is called subject part, and number 2 is called predicate, and always gives complete meaning and sense.
So in multi-word sentence, we always have two parts. We have subject part in it. We also have predicate part in it. But in multi-word sentence, in single word sentence, we did not have two parts. We always had single part. See, in note, it is essential to have both subject part and predicate part in a multi-word sentence. In case one of them is missing, either subject or predicate, the same sentence must not be considered to be a multi-word sentence. In simple words, we can say that a multi-word sentence is the combination of both subject and predicate. Note, both subject and predicate in a multi-word sentence have different roles, and both of them are related with each other. Their sense remain incomplete if there is no proper relation each other. तो मैं सिंपली आपको बताऊं कि मल्टीवर्ड सेंटेंस में इन दोनों पार्ट्स का होना बहुत जरूरी है, सब्जेक्ट का होना और सब्जेक्ट के साथ उसके प्रेडिकेट का. Single subject is not sufficient to make a multi-word sentence, and single predicate is not sufficient to make a multi-word sentence. For a multi-word sentence, you have to make sure that you have got both of them. You must have subject in it, you must have predicate in it. अगर subject होगा और predicate नहीं होगा, it will not be a multi-word sentence. इसी तरह अगर predicate होगा और subject ना होगा, it will not be a multi-word sentence. For example, Roxana can cook biryani. Roxana can cook biryani. So here subject is Roxana and predicate is can cook biryani. So if I simply say Roxana, it does not give a sense. And if I simply say cook biryani, it also does not make a sense. But when they both come together, they create a sentence like Roxana can cook biryani. So this is word multi-word sentence. Now see, rules for writing a multi-word sentence. These are 4 important rules which are very important to learn and to follow and to execute. जब भी आप multi-word sentence को लिखोगे, so you have to make sure that the first letter must be capital. उसका जो पहला हर्फ होगा वो कैपिटल होगा. अगर कैपिटल नहीं होगा, it will be considered wrong. आपको तो लगेगा कि छोटी सी मिस्टेक है, लेकिन इस तरह कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में इस छोटी मिस्टेक की भी कोई गुंजाइश नहीं है. So it will be considered wrong. So you have to be careful that you must use the capital letter at the first. उसके बाद there must be at least one letter space between the words of multi-word sentence. In multi-word sentence के दरम्यान में जितने भी words होंगे, 5 words, 6, 7, 8, 10, 12, 20, उनके दरम्यान एक letter के मुताबिक space होना लाजमी है. Not 2 letters, 1 letter. अभी सवाल ये है, the logic is this, that why there must be a single letter space. इसको ले जाओ, जरूरत नहीं है. नहीं जरूरत, बिल्कुल नहीं जरूरत नहीं है मुझे. Why there is a need of a single letter space. Single letter space का लॉजिक ये है, एक तो पढ़ने वाले को भी समझ आ जाती है कि आपने क्या लिखा हुआ है. They can identify your words. और दूसरा ये है कि अगर सिंगल लेटर स्पेस होगी तो इसके दरम्यान तीसरा बंदा अपनी तरफ से कोई एडिशन नहीं कर सकता. मिसाल के तौर पर अगर आप लिखेंगे आई एम अ गुड बॉय, तो आई एम अ गुड बॉय इनके दरम्यान सिंगल लेटर स्पेस है. तो अगर फर्ज करें आपकी स्पेस ज्यादा है, 2 लेटर स्पेस है, 3 लेटर स्पेस है, तो कोई भी आई एम के बाद नॉट ऐड कर सकता है.
So आपने तो लिखा होगा I am a good boy. Next person will add not. So it will become I am not a good boy. So there can be cheating with your content, which will be disaster for you. Is for the identification of your words, and secondly, for the protection of your ideas and contents. And number three, it must be properly punctuated according to the structure. Structure के मुताबिक आपका sentence punctuate होना चाहिए. Comma must be used if needed. Colon must be used if needed. Semicolon must be used if needed. Question mark is used if needed. Full stop must be used if needed. And there must be logical idea in it. Logic is very important in your sentence. आपके sentences में logic का होना बहुत ही जरूरी है. Especially when you appear for interview. जब आपका interview होगा, so they will focus upon your logic. They will focus upon your logical answers. How much logic is there in your answers? So logic is very important. Logic is more important than your grammar, than your capitalization, than your punctuation. If you have proper capitalization, if you have proper punctuation, and no logic, you will be given 0 marks. How can I say that? For example, she can cook delicious stones. वो पत्थर बहुत लजीज पकाती है. So can stones be cooked? Of course not. So there is no logic in it. Parts of multi-word sentence. Multi-word sentence के जो part थे, एक था subject और एक था predicate. So dear students, subject और predicate को मैं यहाँ पर रोक देता हूँ because it is a very important, very lengthy lecture. इंशाल्लाह अगर next opportunity मिली तो मैं आपको ये clear कर दूँगा. उसके बाद फिर मैं आपको subject verb agreement बारे में भी clear कर दूँगा. So inshallah you will have a very lengthy session with me next. So right now I'm going to stop my lecture now and allow you to ask me any kind of question if you have regarding your lesson. तो lesson के related कोई question हो आपका तो kindly आप मुझसे पूछ सकते हैं please. Yes, engineer साहब. Those who want to ask any question can raise their hands. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. सर ये लेक्चर तो बहुत ज़बरदस्त था सर, लेकिन इसके जो क्लासेस हैं सर, प्रॉपर टाइमिंग इसके बाद क्लासेस शुरू होंगी या नहीं होंगी सर? जी बिल्कुल. और क्लासेस की ड्यूरेशन यही टाइम होगी 8 बजे के बाद? नहीं, Mr. Ilyas will tell you about the duration of time and timing of time because वो weekly आपको schedule share करेंगे तो उनके मुताबिक वो मतलब students को ज़्यादा suitable होगा ना, उसके मुताबिक वो टाइम टेबल बनाते हैं और वो शेयर करते हैं. weekly आपको टाइम टेबल इश्यू होगा. सर जो टेस्ट होते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, इसके अलावा जो टेस्ट होते हैं इसके मुताबिक जो एमसीक्यूज होते हैं इंग्लिश के जो पार्ट्स होते हैं इंग्लिश 20-30% वो हम इसमें कवर कर लेंगे या सिर्फ ग्रामर हमने कराना है? नहीं इंशाल्लाह इंग्लिश का जो पार्ट होगा आपका क्लियर हो. ठीक, थैंक यू वेरी मच. Yes, another person, Sajidul Rahman. Yes, Sajidul Rahman, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज कैन आस्क. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. सर आज का लेक्चर मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा था. हमने कुछ बहुत ज़्यादा किया सर कोई प्रॉपर बुक्स वगैरह की स्टडी करें या आप लोग हमें मतलब कुछ ना कुछ देंगे सर अगर हम आपके साथ क्लासेस शेयर? साजिद रहमान, व्हाट जो लेक्चर मैंने आपको आज दिया है और जो स्लाइड्स मैंने तैयार की हैं, आप शायद हैरान हो जाएंगे. This is the combination of around about more than 200 books. ये जो हम लेक्चर अरेंज करते हैं तो ये आप मल्टीपल नॉट डबल मल्टीपल ट्रिपल मल्टीपल बुक्स को पढ़कर उसके मुताबिक लेक्चर अरेंज करके उसके स्लाइड बनाते हैं. तो अगर आपको मैं नाम लूंगा तो आई एम श्योर नॉट बी एबल टू बाय ऑल ऑफ देम. आप सब हम नहीं करेंगे, जो हमें यही आपके लिए बेस्ट है. तो इंशाल्लाह इट विल
cover your all the things. सर और एमसीक्यूज के लिए हम मतलब कौन सा बुक आपके नजर में अच्छा है मतलब हम देख सकते हैं क्या के लिए मेरे पास अपने अरेंज किए हुए एमसीक्यूज हैं डिफरेंट टॉपिक्स के, तो वो जब हमारी क्लास प्रॉपर्ली स्टार्ट होगी तो मैं डेली वाइज आपसे फिर उसमें असाइनमेंट्स लूंगा, खुद भी आपसे टेस्ट लिए करूंगा। तो जो मैंने एमसीक्यूज तैयार किए हैं दे आर रिसेंट वन एंड